हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। Apart from this, it is also evident that there is no dispute with regard to the norms fixed under the government order dated 20th November 1977. The aforesaid government order is not under challenge. The government order categorically prescribes that no appointment should be made in excess of the norms as indicated therein. Merely because the principal of the institution has initiated the proceeding and the DIOS erroneously granted the permission, the same would not crystallize any right conferred on the principal to make appointment in excess of the norms. The government order, therefore, lays down a blanket ban on future appointments in excess of the norms prescribed. In my opinion, the principal committed a manifest error by seeking an approval of selections in respect of posts which were in excess of the norms of the government order dated 20th November 1977, and to that extent the impugned order cannot be faulted with. The finding recorded by the Joint Director of Education, therefore, fixing the number of posts available to the institution as 14, is absolutely correct and is a calculation made in accordance with the norms prescribed in the government order dated 20th November 1977. The selections which have proceeded indicate that the petitioners were part of a selection in which 16 appointments were allegedly proceeds. From a perusal of the impugned order, it appears that the candidates proposed in the selection proceedings submitted by the principal of the institution were in three categories. This is evident from the facts which have been recorded in the impugned order and is not disputed. The district inspector of schools was informed by the principal through the letter dated 15th September 2006 that 3 candidates have been selected in the scheduled caste category and 5 candidates in the OBC category. Similarly, 8 candidates were selected in the general category. The selections therefore proceeded category-wise applying the reservation policy. The selections therefore were held under the impression that there were 16 posts available and accordingly the distribution was made category-wise. It is thus evident that the selections which have been held are under an erroneous impression inasmuch as only 7 posts were available whereas the selections have been held against 16 posts in different categories. The question is whether the selection could have been
held in the different categories provided the posts were available for each of the said category. The impugned order records that there are 7 persons. अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए, और जहाँ जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक ठाक से आप लोग नहीं बना पाए तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो जो ठीक ठाक लिखे उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो जो आप लोगों ने गोल गोल किया है तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे तब अगर एक डिक्टेशन खराब आया है तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएंगे तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए। पूरा ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो जो गलत हुआ उसका अभी इंग्लिश में जो जो गलत हुआ, क्या क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो जो मिस्टेक हुआ, जो जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए, फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM to 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं और आउटलाइंस भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ये आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपका हिसाब आपका मर्जी से आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है, यही हम लोगों का सबका मोटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।